Good evening. Dear student, today we shall start second section of this chapter, that is the refraction of light. Reflection of light has been completed. Now today we shall start refraction of light. First of all, we shall define refraction. Literally, refraction means deviation or bending or change in direction. रिफ्रैक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है डिविएशन या बेंडिंग या चेंज इन डायरेक्शन, यानी लाइट का मुड़ना, लाइट का अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट होना या लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना रिफ्रैक्शन कहलाता है. You're all familiar that light travels in a straight line in a medium of uniform optical density. Like light travel in a straight line in air, in glass it will travel in a straight line, in other transparent media it will travel in a straight line. But what happens when light travels from one transparent medium, say A, to another transparent medium B obliquely, that is making an acute angle with the interface. Interface means the boundary which is separating the two media. This is the boundary of separation. So when light travels from one transparent medium to another transparent medium having different optical densities, the direction of the light is changed. This phenomena of bending of the light is known as refraction of light. Once again, when a light ray travels from one transparent medium to another transparent medium having different optical density, the direction of the light would have gone in this direction, but its direction is changed. That is, the direction of the light is deviated from its original direction. This phenomena of changing of direction of light
when it travels from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light. फिर समझ लीजिए, जब लाइट ट्रेवल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो लाइट की डायरेक्शन उस बाउंड्री पर जो उन दो मीडिया को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, पृथक कर रही है, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, एंटर करती है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। Now, before we proceed, let us see what is the basic cause of refraction of light. In vacuum, speed of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. In other transparent media, such as in glass, diamond, kerosene, carbon tetrachloride, benzene, diamond, with the speed or velocity of the light is different. The speed or velocity of the light is maximum in vacuum, and in the transparent media, the speed of the light will be less. Obviously, when light will travel from one transparent medium to another transparent medium having different optical density, the speed of the light is changed. The speed of the light is either increased or decreased. And this change in the speed of the light is the basic cause of reflection of light. लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे अधिक होती है और वो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया जैसे ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, केरोसिन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टर्पेंटाइन ऑयल है, बेंजीन है, लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। Therefore, जब लाइट ट्रेवल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। या तो लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, और इसी कारण से यानी लाइट की वेलोसिटी का चेंज होने के कारण से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। Now a question arises, what is this optical density? For 10 class level, we simply define optical density as the property of an optical medium which determines the speed of the light in that medium. Optical density of different media is different. A medium can be optically denser or it can be optically rarer.
Which medium will be called optically denser? A medium would be called optically denser in which the speed of the light will be less, and the medium in which speed of the light is more, light is increased, is said to be rarer medium. In 9th class you have learned mass density. Mass density is the ratio of mass to the volume of the body. Optical density and mass density have different meaning. It is not necessary that a medium which has greater mass density would also be optically denser. यह आवश्यक नहीं है कि वो मीडियम जिसकी ऑप्टिक मास डेंसिटी अधिक है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी अधिक होगी. फॉर एग्जाम्पल, mass density of water is greater than kerosene or turpentine. वाटर की डेंसिटी केरोसिन, मास डेंसिटी केरोसिन और टर्पेंटाइन से अधिक है. बट ऑप्टिकली kerosene and turpentine are denser than water. लेकिन केरोसिन और टर्पेंटाइन की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से अधिक होगी. The ray of light which travels in the first medium is called incident ray. The ray of light which is deviated after traveling into the second medium is said to be refracted ray. The point on the interface where the light travels from first medium to second medium is called point of incidence. A perpendicular drawn at the point of incident to the separation surface, to the interface, the boundary which is separating the two media is called a normal. एक बार और देख लीजिए, वो लाइट रे जो फर्स्ट मीडियम में होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं. सिंपली वो लाइट रे जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है सेकेंड मीडियम में एंटर होने के बाद उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है. इंटरफेस या बाउंड्री जो दो मीडिया को सेपरेट करती है, टू मीडिया को सेपरेट करती है, उस पर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे एंटर करती है सेकेंड मीडियम में उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. A perpendicular drawn at the point of incident to the interface is called a normal. जो इंटरफेस जिस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जहां पर इंसिडेंट रे एंटर करती है सेकेंड मीडियम में, उस पॉइंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर बनाए रिफ्लेक्ट इस बाउंड्री पर जो सेपरेट करती है टू मीडिया को, उसको नॉर्मल कहा जाता है. द एंगल made by incident wave with the normal is called angle of incidence
and the angle made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction. So we have learned that an optically denser medium is that in which speed of the light is less. An optically rarer medium is that in which the speed of the light is more. Let us see. This is the boundary separating the two media. This is incident ray and this is the direction of incident ray. This is point of incident and a perpendicular drawn at the point of incident is normal. This is first medium and this is second. If light travels from an optically rarer medium to an optically denser medium, the refracted ray bends toward the normal such that the angle of incidence will be greater than angle of refraction. यदि लाइट रे ट्रेवल करती है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी एंड वाइस वर्सा. इफ लाइट रे travels from a denser medium to a rarer medium, the refracted ray bends away from the normal, and in that situation the angle of refraction will be greater than angle of incidence. In other words, we can say a medium is optically denser in which the refracted ray bends toward the normal, and a medium is said to be rarer when the refracted ray bends away from the normal. In other words, when light travels from one transparent medium to another transparent medium such that the speed of the light decreases, the refracted ray would bend toward the normal. अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इस प्रकार से ट्रेवल करे कि लाइट की स्पीड कम हो जाए तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल की ओर मुड़ेगी. Similarly, if light ray travel from one transparent medium to another transparent medium such that the speed of the light is increased, then the refracted ray would bend away from the normal. Obviously, a medium is said to be optically denser in which the speed of the light is less, and a medium would be called optically rarer in which the speed of the light is more. So, आज हमने कुछ टर्म्स समझिए, कुछ बेसिक बातें समझिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड. टुमारो वी शैल प्रोसीड.